Good morning, everyone. Hand washing. So today topic is hand washing. Hand washing is the process of cleaning hands with soap and water to remove dirt and microorganisms to prevent infection. That means, what is the meaning of hand washing? To remove microorganism, to reduce infection, to reduce hospital acquired infection. Hand washing, according to NABH, National Accreditation Board for Hospital and Healthcare Providers, is a critical standard in hospital infection control and focuses on technique, timing, and facilities for effective hand hygiene. NABH hand hygiene guideline. Hand hygiene must be performed using a proper technique with the right active ingredient and for an appropriate duration. Hand washing with soap and water is mandatory, then hands are visibly soiled after exposure to spore forming pathogens like Bacillus, Clostridium difficile. Alcohol based hand rub can be used for routine antisepsis if hands are not visibly dirt. Facilities must have hands-free or elbow taps, adequate water and soap, and drying options that do not recontaminate hands. Hand rub solutions should be available near each patient bed or in every ward. NABH endorsed hand washing step. NABH training and standard typically refer to following this step, adapted from WHO, World Health Organization. First, wet hand with water, ideal temperature 35 to 45 degrees centigrade. Second, apply enough soap and rub palm together. Third, rub the back of each hand with the opposite palm. Interlock fingers and rub palm and fingers together. Interlock fingers and rub the back of fingers with the opposite palms. Rotationally, rub thumbs in the opposite palms. Rub fingertips in opposite palms in a circular motion. Rinse hands thoroughly and dry with a single-use towel. Use the towel to turn off faucet. You can see in this picture, these are Global Hand Washing Day. These are 11th step according to NABH. संक्रमण के फैलाव को रोकने और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सिर्फ 40 से 60 सेकंड का समय लगता है. You can see दोनों in this हाथों को video अच्छे से सिखाएंगे मैं how to wash hands according to साबुन लेके NABH guideline. पूरे हाथों पर अच्छे से साबुन लगाना है दोनों हथेलियों को अच्छे से साबुन से साफ करना है दाएं हथेली से बाएं हथेली से दाएं हथेली अभी दोनों हाथ की फिंगर्स को लॉक करके अच्छे से साफ करना है उसके बाद दोनों नकल्स को दाएं हाथ से बाएं हाथ की और बाएं हाथ से दाएं हाथ की नकल्स को अच्छे से साफ करना है फिर बाएं हाथ से दाएं हाथ के अंगूठे को साफ करें दाएं हाथ से बाएं हाथ के अंगूठे को साफ करें इसके बाद क्या करते हैं फिर फिंगर टिप्स को दोनों हथेलियों के ऊपर साफ करें दोनों रिस्ट के एंड्स को अच्छे से साफ करके हाथों को पानी से धो लें टावल से हाथ को अच्छे से सुखाएं उसी टावल से पानी को फिर हाथ को ड्राई करना है Thank you so much.